Hi everyone, Ashish Kyal here and this is a quick live update, just short minute. मैंने सोचा यार 5 मिनट आके आप लोगों से बात करूं, मन हो रहा था इसलिए मैं लाइव आ गया YouTube पे and you can actually see that a lot of people are talking about the Fed rate interest rate cycle and what's going to happen कि Fed अगर interest rate hike करेगा तो market में क्या होगा, how it's going to behave, how the market is going to be, and I thought it's best to be talking about how the Fed rate hike and the stock market has moved over the period of time. And I'm just going to share that across. Just very quickly, I'm want to tell you that if you are liking these kind of videos, then do put your comments and put it across on the chat box, in the comment box. तो वो आप करना ना भूले। सो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज मैंने एक आर्टिकल भी बनाया है, वो मैं सेंड भी करूंगा आप लोगों को। तो बहुत क्विकली मैं एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। देयर इज अ फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन गोइंग टू हैपन and what is the impact on the stock market. That is what we want to see. So let me now very quickly share across my screen here. Over here I'm sharing it across from my website wavesstrategy.com. On this website I have already published this article. This chart is available and you can clearly see this is the Nifty chart with the Fed interest rate that you can see. तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, the blue line is the Nifty that you see and इसकी scale right hand side पे, the orange line that you are seeing is of the Fed interest rate and इसकी scale left hand side पे. So यहाँ पर बहुत ही interesting observation मैं आपको देने वाला हूँ. If you look at the entire movement, the period from 2016, I have not taken the prior data, you can still check that later. From 2016 onwards, the Fed interest rate steadily continued to increase all the way on the upside when the interest rate went to around 2.5%. So this was 2.5%, the interest rate. From there, they started cutting down the interest rate. And the market, अगर देखोगे तो continue to move up slowly and steadily. And यहाँ पर कोविड के वक्त क्रैश आ गया. Interest rate cycle was already on the downside and the COVID crash, they continue to reduce. अब बोलते हैं ना यार ईजिंग पॉलिसी ली है, एंड ईजिंग पॉलिसी का मतलब है यार इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है तो हम रेट कट कर रहे हैं. आफ्टर दैट मार्केट स्टार्टेड अगेन गोइंग ऑन द अपसाइड एंड अगर आप देखोगे द फेड इंटरेस्ट रेट वाज कांस्टेंट फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर 21-22 तक. From 22 onwards, again the interest rate up cycle started. In this period of time, if you check, Nifty was trading around 16,000 level. 16,000 पे निफ्टी था. 16,000 लेवल से मार्केट निफ्टी, फिर भी अगर आप देखोगे 16-17,000 लेवल से निफ्टी हैज कंटिन्यूड टू मूव ऑन द अपसाइड, टच द लाइफ टाइम हाई ऑफ 20,000 के ऊपर. एंड इंटरेस्ट रेट फेड का बढ़ता चला गया, जो अराउंड 4% के आसपास था. इट इज नाउ around 5.25%. So that is very very interesting. Over here if you see this entire chart, अगर आप देख रहे हो, इसमें तो मुझे नेगेटिव कोरिलेशन नहीं दिख रहा है. यहां तो चार्ट में ज्यादातर पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है. इसका मतलब है कोविड के फॉल में इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मार्केट भी गिरा. उसके पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था फेड का और मार्केट भी चढ़ रहा था. उसके बाद में इंटरेस्ट रेट फ्लैट था, मार्केट चढ़ रहा था. उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू टू राइज एंड मार्केट कंटिन्यू टू राइज. सो वेयर इज द नेगेटिव कोरिलेशन इज व्हाट आई एम आस्किंग. व्हाई यू थिंक दैट इंटरेस्ट रेट हाइक और नो इंटरेस्ट रेट हाइक इज गोइंग टू डिसाइड ट्रेंड फॉर निफ्टी? यहां तो दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी पे अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है ना, तो भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है. हम तो यूएस फेड रेट की बात कर रहे हैं. If you go and check RBI policy decisions, what has happened, and look at what is market done. RBI policies has been continuously increasing all the way here, and the market have continued to rise. What I am trying to tell you is that it means that over short term there can be volatility. Over short term there can be possibility that the market is possibly gap down हो सकता है. इवेंट है, हो गया, अगर रेट हाइक कर दिया तो शायद गैप डाउन हो जाएगा. बट एक चीज और है, यहाँ पे शायद कमेंट नहीं दिख रहा है. लास्ट माई टीम टू एनेबल द कमेंट सो यू कैन चैट विथ मी इफ द कमेंट इज एनेबल्ड. सो यहाँ पर एक चीज और भी है
कि once the interest rate cycle turns on the downside, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रैली करेगा। इसका मतलब हो गया कि मार्केट यार अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे का भी अगर हो जाता है तो मार्केट विल डू व्हाट इट हैज टू डू। इंडिपेंडेंट है, अपना काम जो होता है वैसे करना है। दैट इज हाउ मार्केट मूव्स। तो अगर रेट हाइक होता है, गुंजाइश है, वोलेटिलिटी विल इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म, मे बी गैप हो सकता है बिकॉज ऑफ द इवेंट, but then maybe gap fill and the market will do what it has supposed to any which ways do. So why pay attention to something that which is not going to be impacting over the period of few days also? It will impact only on the opening tick, जो हमें गिफ्ट निफ्टी को देख के पता चल जाएगा। So now we should be focusing on the chart. तो कौन सा लेवल है जो मैं ध्यान रख के चल रहा हूं मार्केट में? ये चार्ट आप देख सकते हो। ये चार्ट आप वेबसाइट पे wavestrategy.com मेरी वेबसाइट है, वहां पर आर्टिकल सेक्शन है। यू कैन गो ऑन द आर्टिकल सेक्शन, वहां आर्टिकल सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट दिस चार्ट एंड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देयर। देयर इज मोर पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन the Nifty and the Fed rate rather than negative correlation. So there is no negative correlation over the period of time. Short-term volatility is expected. Now with that in mind, what are the key levels that I am looking on the market? Nifty has an important support of around 19,000, of around 18,960. और आज उसके आसपास ही हम फॉलो कर रहे थे। अगर आप मेरा मॉर्निंग ट्वीट फॉलो कर रहे हो दोस्तों, सो आई एम श्योर यू माइट बी लविंग इट बिकॉज एग्जैक्ट लेवल्स आते हैं जो मॉर्निंग ट्वीट में मैं डालता हूं। कल मैंने वो डिस्कस भी किए मेंटीज के साथ, वो लेवल्स मिलते कैसे। सो फिलहाल के लिए मेरा जो लेवल है वो 18,960 है। अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तो प्रेशर बन सकता है। दैट इज वन लेवल। ऑन द अपसाइड आई नीड अ मूव अबाउट 19,100. दैट इज द नेक्स्ट लेवल दैट आई एम लुकिंग एट. So for the expiry, that is my range. In that range, if the opening of the market happens, well and good. If the market opens beyond that range, then I will have to tweak my levels and see कि यार नीचे gap down हो रहा है, तो what is the support? Where is the pullback? So I'm going to play around that. So these are the two key levels that keep a watch on for tomorrow. 19,100 के ऊपर अगर क्लोज होता है, आवरली क्लोज देख लो या 15 मिनट्स भी चलेगा, या 18,960 के नीचे 15 मिनट्स क्लोज देख लो, ओपन कहीं भी होने दो। 15 मिनट्स क्लोज देखना है। अगर वो सही हो गया इस रेंज में तो मार्केट कल एक्सपायरी रेंज में है इसमें। अगर उसके बियॉन्ड हो गया तो मॉर्निंग में मैं ट्वीट करूंगा कि भाई कहां पर लग रहा है। सो डू एंश्योर टू फॉलो मी देयर एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अक्रॉस विथ यू ऑल। अगर ये शॉर्ट स्निपेट्स आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट डालना ना भूले, लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आई कैन कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ videos, short videos, basis of event, how you have to trade the market, giving you exact levels where you have to do and how you have to look at it. That is what I wanted to share across. And also जाते जाते एक और चीज दोस्तों, सैटरडे को I am conducting an exclusive master class which is on trading using candlestick and time cycle. It's a free master class, लेकिन आप आना ना भूले। Link will be there in the comment section. ये soon update हो जाएगा and in the description also. Once it's there, you just have to be with me. It's on 4th of November, so do not forget to register yourself. And we go houseful, so you might miss out on the opportunity. And we also have a mentorship which is starting in November. So in case you are interested in the mentorship program, do let me know. आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे वापस से। देखते हैं क्या मार्केट का मूड होता है, क्या लेवल्स होते हैं। ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलना because I keep tweeting very actively during the market hours. Thank you very much for joining in and give me a thumbs up if you like this video. Thanks a lot.